Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is control statements in Python. Learning aims. After studying this chapter, you will be able to know about conditional statements in algorithms and flowcharts, know about sequential statements, and know about iterative statements like if else. Conditional statements in Python. Conditional statements refer to those types of statements that are executed by the program according to the condition which has been specified. It is basically like a condition or situation in which a decision has to be made. तो conditional statements होती हैं जहाँ पे आपको कुछ conditions को पहले से fulfill करना होता है दूसरे condition को execute करने के लिए. For example, Aman's father has to go to the office. Condition, if he is on time. Decision, he will go to office by bus. Now, another condition is if he is late. Decision, he will go to office by cab. तो यहाँ पर क्या है? For example, Aman's father has to go to office. अगर time पे होंगे तो क्या decision होगा कि वो office बस से जाएंगे. Late होगा तो कैब से जाएंगे. तो पहला जब आपका पहला if statement आपका fulfill होता है उस पर determine करता है decision क्या लिया जाएगा. So algorithm refers to a step-by-step description of a condition in the decision which has to be taken if a certain condition occurs. Let's understand the usage of algorithms through an example. तो कुछ conditions occur करती हैं उनको fulfill करना पड़ता है तब algorithm में step-by-step functioning होती है. So a school has decided to take the students of class 7 on a school trip. If the number of students going on this trip will be more than 20, then the school will take them to the book fair. But if the number of students going to the trip is less than 20, then the school will take the students to the science museum. Algorithm to apply for this situation is input the number of students in class 7, check the number of students. If the number of students is equal to or greater than 20, then the students of class 7 will go to the book fair. If the number of students is less than 20, then the students of class 7 will be taken to the science museum. तो यहाँ पे क्या है क्लास 7 के बच्चे हैं 20 या 20 से ज़्यादा अगर आपका एल्गोरिदम या स्टेप बाय स्टेप में बच्चे हुए तो जाएंगे बुक फेयर. 20 से नीचे हुए तो जाएंगे साइंस म्यूजियम. तो यहाँ पे क्या होगा आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डालोगे क्लास 7 में इनपुट देन यू विल चेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन 20 तो बच्चे जाएंगे बुक फेयर और अगर हुआ 20 से नीचे इफ वाली स्टेटमेंट में तो वो जाएंगे साइंस म्यूजियम. सो नाउ देयर इज अ फ्लो चार्ट. The flowchart is a pictorial representation of a condition that helps to take decisions. Let's represent the above example of a school trip using a flowchart. Let us recall the basic symbols of the flowchart. Symbol, rounded rectangle. Name is start or stop box. Use, it shows the starting and ending of the flowchart. Then you have a parallelogram. Name is input and output box. The uses, it is used to read and print the data. Rectangle, process box, it shows the commands for calculations. Diamond, the decision box, it is used to take decision and follows exactly one of the two few lines. Then you have arrows, the flow lines, it shows the connection between the symbols of the flow charts. अब सिंबल आते हैं राउंडेड रेक्टेंगल स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स ये होता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताता है फ्लो चार्ट का. फिर इनपुट आउटपुट बॉक्स विच इज द पैरेललोग्राम ये आपके डेटा को रीड और प्रिंट करने में हेल्प करता है. फिर आता है रेक्टेंगल विच इज द प्रोसेसिंग बॉक्स ये आपके कैलकुलेशन जैसे कमांड्स को प्रोसेस करता है और दिखाता है. फिर आता है डायमंड द डिसीजन बॉक्स ये डिसीजन लेता है एंड इट फॉलोज एग्जैक्टली वन ऑफ द फ्यू लाइन्स. देन यू हैव द फ्लो लाइन्स ऑल्सो नोन एज द एरोज ये आपके जो फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं उनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करता है. Now let us have a look at some examples. Example 1, flow chart to determine whether the students will go to the book fair and science museum depending on the number of students. तो यहाँ पे क्या है बीच में आपका डायमंड वाला डिसीजन बॉक्स आ जाएगा. इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू और ग्रेटर दैन 20. इफ नो द स्टूडेंट्स विल गो टू द साइंस म्यूजियम. इफ येस द स्टूडेंट विल गो टू द बुक फेयर. You have yes and no statements. Then you have start and stop point. Input the number of students of class 7 in the very beginning. Example 2, flow chart to find the largest of the three numbers A, B and C. सबसे पहले you will start के बाद input आ जाएगा आपका A, B, C. Then is A greater than B? If yes, is A greater than C? If again yes, print A. If no, print C. Then if is A greater than B? The answer is no. Is A greater than B? If no, then print C. If yes, then print B and then the ending. Now activity time, fill in the boxes to find the greater number between two numbers x and y. You have to follow the previously done examples में जो भी आपने steps कर रहे हैं and just find it out. Then the flow of control. The order of execution of the statements in a program is called as a flow of control. There are three types in programming language. The statements may be executed sequentially, iterability and selectively. तो आपका flow of control आता है
इसमें आपका ऑर्डर और आपके स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता है एक फॉर्मेट में, एंड दिस इज नोन एज द फ्लो ऑफ कंट्रोल. 3 टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके पास ये होता है. द स्टेटमेंट्स में बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली, iteratively and selectively. Now control statements and their types. Control statements are used to change the sequence in which statements are executed by the computer or to alter the decision of a specific statement. अब आपको या तो sequence change करनी है जो statements आपकी given है, या फिर आपको कुछ ना कुछ specific statement में कुछ alterations करनी है उनकी execution में. That is when you use the control statements or their types. Let's learn about the different types of control systems. Number 1 is sequential statements. In sequential statements, the statements in the program are executed in a sequence with one statement after another. For example, write a program to calculate the area of a rectangle. First, enter the length and breadth of the rectangle, then calculate the area and print the result. तो sequential statement में आपकी जो statements होती है step by step, one after the other होती है. And then you have the iterative statements. Iterative statements allow a statement to be executed till the condition remains valid. If the condition becomes invalid, then the operation of this command stops. अब iterative statements में क्या होता है? It allows a statement to be executed जब तक condition आपकी valid रहती है. जहाँ पे आपका condition invalid आया वहीं पर ही अपना command बंद कर देती है. Now let's see the conditional statements. It is important to understand how conditional programming works before you start writing programs. In conditional programming, the decision is based on condition. If the condition is true, then the program executes the statements. The statements which are executed depending upon a condition are known as selective statements. A condition is used to decide which set of statements is to be executed between two alternative sets of statements. Therefore, these statements are also called the conditional statements or decision constructs. अब conditional statements आती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे पहले आप लिखना स्टार्ट करें प्रोग्रामिंग को, पहले ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कंडीशनल प्रोग्रामिंग जो होती है, ये डिसीजन इज बेस्ड ऑन द कंडीशन. इफ द कंडीशन फुलफिल्स, द कमांड विल बी मेड एंड द एग्जीक्यूशन विल बी डन, अदरवाइज नहीं होता है. So a condition is used to decide which set of statements is to be executed between the two alternate set of statements. So let's discuss some of the conditional statements. If statement. So सबसे पहले है if statement. The statement is used for the execution of any one statement according to the fulfillment of the condition. The simplest form of an if statement tests a condition, and if the condition evaluates to true, it carries out some instructions and does nothing in case the condition evaluates to false. अब आपका आता है if statement. ये if statement जो होती है, ये आपकी तब यूज होती है जब आपको एक स्टेटमेंट के बाद उसकी फुलफिलमेंट के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू बी ट्रू, तो बाकी के सारे इंस्ट्रक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करवा देती है. सिंटैक्स इज इफ opening condition, statement 1, statement 2. Simple syntax. So tech nuggets, syntax is a set of grammatical rules that need to be followed while writing a program. तो syntaxes आपके वो grammatical rules होते हैं, जैसे इंग्लिश में आपके grammatical rules होते हैं, अगर आप उसको हटा दोगे तो आपकी सारी इंग्लिश खराब हो जाती है. वैसे ही ये आपके प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं. विदाउट नोइंग दीज या इनको बिना डाले आप कोई भी प्रोग्राम को राइट नहीं कर सकते हैं. Now, working mechanism. If the condition is true, then statement 1 will be executed before statement 2. If the condition if is false, only statement 2 will be executed. तो यहाँ पे आपका if statement आ गया. If the condition is true, तो statement 1 आपकी statement 2 से पहले execute होगी, और अगर statement if false निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ statement 2 ही आपकी execute होगी. So the flow chart of the if statement is given below. Start, is the condition true? If yes, execute statements, and if no, execute the statement, which is the statement number 2. If the condition is satisfied, then the statement following the if will be executed. Then we have if else statement. This statement is used when there are two probable conclusions to the fulfillment of a condition. Therefore, depending upon the condition, either one of the two conclusions is valid. The statement tells us that if a condition is true, it will execute a block of statements, and if the condition is false, it will execute another block of code. Syntax says if opening condition tag colon statement 1 else statement 2. अब
इफ और एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, ये आपकी तब यूज होती है जहां पे आपके दो प्रोबेबल कंक्लूजन्स होते हैं टू द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन. तो डिपेंड करता है कि जो कंडीशन 1 या कंडीशन 2 कंक्लूजन में से कौन सा वैलिड है. स्टेटमेंट बताती है दैट अ कंडीशन इज ट्रू, इट विल एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, और कंडीशन अगर फॉल्स निकलती है तो इट विल एग्जीक्यूट अनदर ब्लॉक ऑफ कोड. जैसे आपको यहाँ पे आ जाएगा इफ द कंडीशन टैग स्टेटमेंट 1 अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट 2. अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 2 से पहले स्टेटमेंट 1 आ जाएगी, अदरवाइज एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट आएगी. Then you have the working mechanism. If the condition is true, then statement 1 will be executed, else statement 2 will be executed. Or if expression statement 1, statement 2, else statement 1 and statement 2. The flowchart of the if-else statement is given below. Start, is the condition true? If yes, execute the statements. If no, execute alternate statements. And then statement 2, finally the stop version. For example, write a program to check whether a number entered is greater than 500 or less than 500. Then you have if, elif, else statement. The if, elif, else statement is used in a program when multiple valid options have to be considered before the program is executed according to the condition. This kind of statement is used in case a user has to decide among multiple options. अब if, एलिफ और एल्स की स्टेटमेंट जब तब यूज होती है जब मल्टीपल वैलिड ऑप्शन होते हैं और यूजर को बहुत सारे ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट या ऑप्ट आउट करना होता है. और इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, एलिफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2, एलिफ कंडीशन 3 स्टेटमेंट 3, एल्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट एंड देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट. Now let's see the working mechanism. If the value of condition 1 is true, then statement 1 will get executed. If the value of condition 1 is false, that the condition in the elif will be executed. If neither of the condition satisfies to be true, then the default statement will be executed. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी condition 1 की value true है, statement 1 will get executed. अगर value 1 condition 1 आपका false है तो आपका elif वाला condition execute हो जाएगा, और एक भी अगर ठीक नहीं है तो default statement जो आपकी है वो execute हो जाती है. So they start condition 1, if true, execute statement 1, if false, then you have condition 2, if true, execute statement 2, if false, then you have condition 3, if it is condition 3 is true, execute the statement 3, if false, then the default statement comes into place and then you have to execute the next statement. So the flow chart of the if, elif, else statement is given alongside, जो अभी हमने देखा. Example 1, to determine whether a person is eligible to cast a vote or not according to the age using the if-else statement. तो if-else statement को यूज करते हुए कोई एक वोटर एलिजिबल है वोट देने के लिए नहीं है, वो यहाँ पर देखते हैं. So created the code in a new file in Python. Hashtag can cast vote or not. Age is equals to int input. Then open bracket, in between the inverted commas, enter the age of the person, then the colon, and then the two closing brackets. If age is greater than or equal to 18, print the person is eligible to cast his or her vote, else print the person is not eligible to cast his or her vote. Save the file, execute the file, note output is taken once. Then restart, enter the age of the person is eligible to cast his or her vote. तो यहाँ पे hashtag can cast vote or not आ जाएगा, age आप डाल दोगे, input डाल दोगे, enter the age of the person. If age is greater or equal than 18, then you will print the person is eligible to cast his or her vote, else print the person is not eligible to cast his or her vote. तो यहाँ पे अगर if वाली statement valid होगी तो स्टेटमेंट 2 से पहले इफ वाली स्टेटमेंट आएगी, अगर स्टेटमेंट 1 वैलिड नहीं होगी इफ वाली तो सीधे आपका स्टेटमेंट 2 जो एल्स वाला स्टेटमेंट है वो आपका सामने आ जाएगा. Then you have to save the file and finally execute the file. Then you have example 2, to designate a grade to the student according to the marks achieved. Solution, write the following code in a new file in Python to determine the grade of the student. Mark is equals to int, which is the input, then open bracket, in between inverted commas, enter the marks of the students. If mark is greater than or equal to 35, print the designated grade is F. Elif mark, if greater than or equal to 45, print the designated grade as E. Elif mark greater than or equal to 55, print the designated grade is D. Elif mark greater than or is equals to 65, the designated grade is C. Elif mark greater than or equal to 75, print the designated grade is B. And else print the designated grade is A. अब यहाँ पे क्या है? Then you have to save and execute the file. Note that output is taken twice. यहाँ पे आपको ग्रेड्स देने हैं बच्चों के एग्जाम के
बेसिस पे। इफ एलिफ वाली स्टेटमेंट है क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस है, पहला आ जाएगा इफ मार्क इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 35 तो एफ होगा, फिर एलिफ की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और लास्ट वाली स्टेटमेंट में आपका आएगा एल्स स्टेटमेंट। जो ठीक होता जाएगा, एलिफ वाली स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होंगी तो वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज आपकी बाय डिफॉल्ट एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन यू हैव टू सेव एंड एग्जीक्यूट द फाइल और ये आउटपुट आपका 2 बार लिया जाता है। Then you have example 3 to determine whether the entered number is positive, negative or 0. Solution, write the following code in the new file in Python. Number is equals to int input, enter a number of your choice. If number is greater than 0, print the entered number is a positive number. If number is equals to 0, print the entered number is 0. Else, print the entered number is a negative number. Save and execute the file and note the output is taken थ्राइस। अब यहाँ पर आपको इफ और एलिफ वाली अगेन स्टेटमेंट है, देखना है कौन सा नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। इनपुट आप डाल देंगे, नंबर ऑफ योर चॉइस, जो नंबर आप डालना चाहते हैं। देन यू हैव द इफ स्टेटमेंट इन द बिगिनिंग, अगर वो सही होगी तो आपका वो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन यू हैव एलिफ स्टेटमेंट, इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अगर सही नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट आपका एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेव एंड एग्जीक्यूट द फाइल और यहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो 3 बार एग्जीक्यूट होगा, 3 बार लिया जाएगा। Now let's sum up. The order of execution of the statements in a program is called the flow of control. The statements which are executed in a sequential order, that is one after the other without any jump, are known as sequential statements. The statements which are executed depending upon a condition are known as selective statements. अब आता है आपके order of execution in statements के basis पे. This is a flow of control. किस तरीके से आप syntaxes देते हुए इन डेटा को डालते हो. If statements, if else statements, if elif statements when you have multiple options. Now explore yourself. Multiple choice questions. Which of the following is a pictorial representation of a condition which helps to take the decision, and this is algorithm or the flow of chart. Then you have fill in the blanks. The control and flow of a program in Python can be classified into 3 categories, and these are sequential, then you have iterative, and then you have selective. Right, T for true and F for false. Syntax is a set of grammatical rules that need to be followed while writing a program. Absolutely correct. Critical thinking, Nancy is developing a simple code to add 2 numbers, but she forgot to give closing brackets of the print statement. On executing the file, an error is shown. She wants to know the type of error that has occurred. Answered her query. तो यहाँ पे query है which you have to answer. We have learned already the steps from this chapter. Just help Nancy out. Answer the following questions. Define the flow of control. Flow of control में आपके पास वही if statements, if else statements, if else statements का एक sequence आता है जिसमें आप सारे के सारे answers को या फिर अपने statements का input देते हो. Now take fun. Across and downwards you have certain questions and you have to answer them accordingly. We have already studied this in this chapter. So students, with this we are done with this chapter. Go through the entire chapter properly. Read it once again properly. Try to do all the syntaxes in your Python file, and rest of the exercise questions, please do it yourselves.